topic names and the introduction. Okay, so then comes Good the morning. conclusion. Yeah, then the conclusion will be that it was a very healthy discussion or it was a very interactive session. Now you cannot have a neutral ending to this topic because it's one-sided topic, because there it's already a negative one. You will say that drug usage, some important lighters you could mention that yes, drug usage is at peak, and due to which multiple other dimensions, that is, you can talk about depression, isolation, the suicide cases in youth is at peak. You can quote even some points if you have noted about your friends, and then one liner at the end that government and even the youth needs to understand that this is something very evil and we need to eradicate it from our society. And following some important measures should be taken. So related to one liner end, you can talk about the eradication and government plans, something related to government, that how it can go for some plannings policies. Okay, so this is a way we need to introduce the topic and we need to conclude the topic. Is it clear to everyone? As we discuss every day, the same thing we are discussing, 5 things in introduction and 4 things in conclusion. Clear to all? Now, 4 minutes, everyone, to note down the points, 3 to 4 minutes. It's 10:08 by my side. We can start at 10:12. Clear to all? Aditya, you just popped up right now. Is Aditya there? Aditya, you just popped right now. Just mute your background music. There's quite a disturbance at the back. Okay, Aditya, are you aware about the topic? Because we need to start with the discussion now. Okay, guys, you can start, I think. He's not there. Amit, change your place. It's quite disturbing at the background. Okay. So yeah, Ansh, you can go ahead with the introduction now. Good morning, teammates. Today our topic is who is to blame for drug uses among youngsters. And in my opinion, there is a lot of factors which is involved, like social medias, corruption, bad parenting, which lead to drug uses in youngsters. The bad parenting is a main cause. Bad parenting due to पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, इसकी वजह से ड्रग्स का यूजेस बढ़ रहा है. इजी अवेलेबिलिटी ड्रग्स भी एक कारण है जिससे ड्रग का यूजेस काफ़ी यंगस्टर पे है. तो हम इसके वेरियस एस्पेक्ट पे डिस्कशन करेंगे, इसके कंसर्न पे कि किसको ब्लेम करना है, क्या क्या रीजंस हैं. तो मैं डिस्कशन ओपन करता हूं, आप अपने पॉइंट्स. Yes, I want to First add thing in that a मैं point. ऐड करना What चाहता हूँ कि kind जैसे of एक सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी है. that guy has, जैसे किस तरह से where हम he ये lives, with whom अवेयरनेस he दे सकते spends हैं लोगों time. को Yeah. कि मतलब Where he कैसे spends मतलब time, कि that is one thing. Like if he, first of all he is spending time with his friends, right? अगर फ्रेंड सर्कल ही ऐसा हो जो कि उसको प्रमोट ना करे तो डेफिनेटली वो छुप के करेगा या फिर उसको कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आएगी. बट अगर फ्रेंड सर्कल ऐसा रहे जहाँ की उसको प्रमोट किया जाए तो वो एक रीजन हो सकता है. दूसरा, वो टाइम अपना स्पेंड करता है अपने पेरेंट्स का. डेफिनेटली जैसे कि अंश ने बोला कि पेरेंट्स डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें. अगर पेरेंट्स उसको वैसा सपोर्ट या वो नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली एक प्रेशर फील करेगा
उनको तो इस डायरेक्शन में वो ज्यादा मूव कर सकता है। तो पेरेंट मैं जो भी नवीन ये सोशल कहना सर्कल चाहता हूँ है कि नवीन, जैसे इसमें तुमने बोला कि पेरेंट्स का, अनएम्प्लॉयमेंट भी तो एक अगर बहुत वो बड़ा रीजन है। पेरेंट्स इनफ टाइम अनएम्प्लॉयमेंट पेरेंट्स रीजन अगर भी इनफ एक टाइम है जिसको स्पेंड हम करेंगे लोग अपने बच्चों के कंसर्न ले साथ में, सकते हैं, तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इतना एंड वो गवर्नमेंट नहीं पॉलिसी को भी होगा ले उनको सकते हैं। डिफिकल्ट। जैसे बिहार में लेते हैं हम लोग, जैसे बिहार में दारू बंद है, लेकिन यहाँ पे लोग क्या करने लगे हैं कि लोग दोनों चीज का सोल्यूशन इजिली अवेलेबल है, तो लोग उसी को ड्रग्स के रूप में उपयोग करने लगे हैं। तो इसमें मैं मानता easy हूँ थोड़ा सा availability of गवर्नमेंट drugs. पॉलिसी को भी I want to add one point here. Through movies and web series, also Yes, yes. Western culture, they promote this very much. So this is also a factor. Yes, Also from Anurag, foreign I think the powers thing is like what they in see they Punjab, try to become. we Yes, have they from fascinate that. Pakistan, they supply Yeah, the they drugs I for the they youth of fascinate Punjab. that and they show नवीन, मैं यहाँ पे एक These पॉइंट are ऐड the They करना things. चाहूंगा fascinate that क्योंकि what they see they try to do like that इस only. इस इस चीज को कम करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को इस सब को कम करने के लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले एक स्ट्रिक्ट रूल लाना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से करना चाहिए। think क्योंकि we should हम first जहाँ भी stick देखते हैं, with जैसे एक फ्रेंड ने बताया कि बिहार का एग्जाम्पल दिया, बट वहां पे मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट उतना स्ट्रिक्ट नहीं है और लैक ऑफ वहां पे जो इन्फॉर्मेशन वो पहुंच नहीं रहा है, इसलिए लोग मिस यूज करके प्रोवाइड कर लेते हैं। we तो should see the First of all, गवर्नमेंट you को should area. मतलब We have to ड्रग्स find स्ट्रिक्ट ड्रग्स का जो मेन इम्प्लीमेंट फॉलो रीजन करने है चाहिए रूल। एक्चुअली वो डिप्रेशन से आता है। डिप्रेशन की वजह से स्टार्ट करता है कोई भी इंसान ड्रग्स लेने। तो अगर हम उसके डिप्रेशन को कम करने के या उससे बात करके उसको कम कर सकते हैं तो ज्यादा है। इसमें Yeah. सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें पेरेंट्स See, का। drugs has been इसमें the पूजा अपना और फिर पेरेंट्स अपना गवर्नमेंट का बच्चों के भी साथ रेट में देखना अच्छे से पड़ेगा ओपन, कि क्या अगर समस्या है पेरेंट्स लोगों के अपना पास। बच्चों के साथ में ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वो कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो अगर उसको डिस्कस I करके वो agree लोग I उसको agree इजीली with the सॉल्व आई कर friend. एग्री सकते हैं, विद तो पूजा, ड्रग्स की बट तरफ नवीन नहीं I agree with जाएंगे। the friend, but I can जैसे फ्रेंड add सर्कल one आल्सो valuable वेरी point. इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्ले। Yeah. फ्रेंड सर्कल कैसा Yes, है कॉलेज definitely. में, जैसे हम If a लोग guy जिस तरह से doesn't कॉलेज में have शुरू any में जाते हैं kind तो of वो support उसमें system, शुरू में if ही he doesn't have ऐसा a सर्किल support बना है। system, then definitely he will try to go somewhere where he find peace and something. So I first think of all, he I need want to to have some kind I of think support yes system. It I can be I their have to agree put parents, their agree with a the और friends, फ्रेंड्स their से here. partner, or Yes, There I is anyone an it think can be. ecosystem of friend A circle support is system is important definitely role. required. find out yeah. how While the how the drug comes to the we can say youngster. There is a two route. One is domestic, there is an international look. When we talk about the who to blame, so we have to check list everyone from what route that come to that youngster. First in domestic route, in domestic we can say in India, so we have to find out from where that drug comes from. The first question is the first answer is the farmer. In internationally the youngster get the drug comes in India from the international border. So there are the two checkpoints: first from farmers, and then internationally from the interstate borders. Here in farmers, can we question the farmer? They don't have that much of I time. think I think No, I I think should it's add one more disagree point here. disagree with the Prajwal, disagree with the We friend. can The- tell that, yeah, if weeds these and all are drugs not are even cultivated grown, in then how इनके will the द्वारा youngster get tribal that? areas. They That don't point know we the can harm. definitely add. That easily available whenever in There the is farmers drug supply farmer from in Actually, Pakistan. what- That is actually we what cannot happens blame is a State. single they are person here. not going We to cannot blame a yeah, single grow person wheat, here then how will about this, the because youngster get that? everything, every person have their own role in this. And I should also add one more point here, that already Anurag tell that the movies in recent times the movies will just taking smoking and consumption of alcohol is they make them, it is a very good quality like heroes. Due to it is the initial start. Yeah. First they start smoking, then slowly they can go to the drugs. So that is the Yes. initial It point. starts, And yes, also yes, definitely. agree with the Naveen Raju. also tell that the parenting. In recent news, I will see that Shah Rukh Khan's son will involve in these cases like this, and I think there so is the a parenting is also involved in this very important role. main Parents' मैं role, यहाँ if पे the parents' life point is है in कि curiosity among मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना youngster. चाहूंगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो चीज हम कंज्यूम करते हैं ड्रग इसका साइड इफेक्ट क्या होता है इसको अच्छे से बताया जाता है। सिर्फ बोलता है हेल्थ के लिए इंजूरियस होता है, बट एक्चुअली किसका क्या इफेक्ट होता है अगर उसको एजुकेशन सिस्टम में अच्छे से पढ़ाया जाए Definitely, ताकि that's a very बच्चे good उसको point, एडॉप्ट yes. कर सके। Awareness should be there that लोगों what का is the तो लोगों का drawback या of this तो मैं yes, बोलूंगा awareness एजुकेशन should be there. डिपार्टमेंट को वो तो एक नॉट अवेयरनेस, मैं बता रहा हूँ कि मैं ब्लेम दे रहा हूँ, यहाँ पे ब्लेम दे रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम में ये चीज इंक्लूड नहीं है कि उसका साइड इफेक्ट क्या है, तो उसको अच्छे से पढ़ाया जाए अच्छे से।
I think there is a one Definitely in point the also. education Yes, I system agree also with we you. can tell about the Investor. Awareness सबसे पहले हम लोग ये कहना चाहते हैं कि awareness के गवर्नमेंट साथ पॉलिसी साथ एक बहुत साथ बड़ा जो there है is, गवर्नमेंट पॉलिसी किस but स्टेट में yeah, किस तरह का one thing गवर्नमेंट that I पॉलिसी है, wanted to add उसके in बाद this, फिर हम there लोग is some kind फैमिली of पर आते supply हैं, chain, right? उसके बाद फिर ग्रुप पे There is आते some हैं kind कि of किस supply तरह से chain, फ्रेंड and सर्किल है, if उसके बाद फिर फैमिली पर yeah, आते हैं किस तरह से इन्वायरमेंट है, और फिर आसपास का क्या माहौल है। जैसे बिहार स्टेट हमने उदाहरण दिया, जैसे अभी पंजाब का जो रिसेंट है कि वहाँ पे ज्यादा ड्रग सप्लाई बाहर से हो रहा है, तो भी एक बहुत बड़ा रीजन इसमें हम मानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा Yeah, सकता है। Punjab is one of the leading states in yes, India that is Drug. more yeah, affected in. what I Yes, was I should saying is also Yeah, that yeah. add there is here one point definitely one regarding kind of, Punjab it's state definitely going to itself. be a supply Corruption, In chain, Punjab, right? corruption, From the where I the think drugs parties. comes, and yes, अगर there, ड्रग कहीं ना कहीं से आ रहा है तो डेफिनेटली इस पे हम लोग उसको पुलिस रोकने डिपार्टमेंट के या लिए उसको हम agree ब्लेम with कर the सकते हैं, agree with क्योंकि the इन बिहार agree with ओनली the वी कैन friend. सी दैट यस वाइन इज, और जो भी दारू या ये सब चीज है वो डेफिनेटली बैन है, बट स्टिल इट इज Corruption गोइंग ऑन, वाइन इज means स्टिल देयर, Yeah, एंड corruption पीपल is आर a being corruption same in thing government I think in administration Gujarat ultimately. also. It should corruption in the not can department. specify definitely these blame states the now. police department and all Ultimately, government also in this administration should case. be very, very Yeah, stringent. administration. So we have to take it into account that addiction is also a main issue. Those people who are trying to stop usage of drugs but are still addicted to it, we have to come forward and promote help programs so that they and other people who are still addicted can willfully leave it Yeah. with the Yeah, help. so Omka, I want to add here one yeah, point Yes, regarding to there is the a rehabilitation yes, programs done by the is the Punjab government. awareness, मतलब The कि ये Punjab government उपाय है कि ये will ड्रग्स spend more बाहर money. कैसे आएंगे, लेकिन हम लोग को ये ढूंढना कि ये ड्रग्स लोगों के अंदर जो आ रहा है, मतलब कि क्यों बढ़ रहा है, ड्रग एडिक्ट क्यों बढ़ रहे हैं, वो तो I think ओमकार जो आप बता रहे हैं वो हुआ corruption कि I किस totally तरह से हम agree लोग उसे with दूर the कर Amit. सकते हैं, We have to लेकिन just department find से Yeah, out आ रहा corruption है जो पुलिस point डिपार्टमेंट what का I want इधर to में add है, one the point. क्योंकि drugs, अगर what the stakeholders गवर्नमेंट Youngsters सही see तरह से drugs as सारा the कुछ prevention फॉलो of infrastructure करे, stress and department तो है, depression. उसके डेफिनेटली So we भी should इसके प्रॉब्लम counsel को them One कम of तो the जरूर main किया they are जाएगा। reason not the method to prevent behind your stress and increasing the depression. drug addict They is, see I them think, is the drugs as the depression and prevention to anxiety the among stress. corruption in youngsters. department This is is a the also main Yeah, reason, also that I is one think. point. Reason. main concern. Corruption is a I think main concern. Corruption because of the corruption there is a easy availability of drugs. So Yes. we have to That's what clear my the point I want was to add कि one वो पुलिस example. डिपार्टमेंट जो है वो कहीं Everywhere ना in कहीं मिले रहते हैं इनसे, Yes, I totally तभी agree वो with you. not इजी only इजी police वे में department, उसको ये everywhere, अवेलेबल करवा पूरा even पाते हैं। ये पूरा पूरा एक ecosystem चेन है। है कि जो पूरा एक अवेलेबिलिटी सप्लाई करवाने चेन का ऑलरेडी बना चेन रहता बना है, तो हुआ है। ये यस वो पॉइंट एक इसमें ऐड कर पॉलिटिशियन सकते मिले होते हैं, पॉलिटिशियन मिले होते हैं, पुलिस मिले होते हैं, और लोकल लेवल हैं। यस, सोसाइटी पे जो बिकॉज होते हैं उस या टाइप टू लोग भी मिले होते हैं, इम्पोर्ट समथिंग इट्स इस नॉट सबका दैट इजी। या एंगेजमेंट होता है। import or export of something is not that easy. For that definitely you need to have some kind of political background or support, and also from the police department or all, you need to have something like that, yes, I because should import also हमारे add देश one में more कभी point भी here that आसानी हाँ, से हो जैसे नहीं कि पाएगा, the cultivating of और this दूसरा from even जैसे from कि different state अनुराग ने also बोला it's था, not these that drugs. easy, so definitely we Generally, और can these दूसरा agree. drugs जैसे are कि अनुराग ने बोला था कि जो मूवीज और उनसे जो एडवर्टाइजमेंट होता है उन सब में लिखा रहता है कि दिस इज ये Injurious जानलेवा for हो health. सकता है, और Yes. या बट फिर भी लोग अपना आइडेंटिटी वो फाइंड करने के लिए या कूल बनने के लिए वो सब ट्राई करते हैं कि हम yes, इससे yes. कूल लगेंगे, क्योंकि मूवीज में ऐसा ही Yeah, दिखाते हैं कि स्मोकिंग करने वाला कूल है, drugs ड्रिंक are करने being वाले seen कूल as है, a way या of Yes, modernization. so yes, So we can yeah, definitely yeah. blame I want the to add one directors example. and all. I want to yeah, add one also example. film industry also. Youngsters I are want to consuming put drugs. I want to add one example. Every day in every workplace, people are feeling some pressure. For example, in the young age, for example, the results are announced. What people will do immediately? People will call him and ask about the results. Even though they know he didn't get good results, that's why he didn't call them. But they call him, he will feel depressed. In that depression, if he met one bad friend, means he will get attracted to the drugs and all these things. This is one reason. Naveen, that We is should what not. we had Yes, discussed. Yeah. The drugs Yeah. is not the method to that we reduce have the to cut the depression and supply stress. chain. Yeah. From where the drugs Yeah. we are Yeah, getting but the initially. thing is that We in the should give movies and advice to all, them. it This is is not the it is method to reduce the already depression and depicted stress. that That if is you something are different. depressed and all, What then the drugs business? is the solution. Yeah, Yeah, about that is that depicted we in the should movies and all, that if you maintain are a healthy depressed, if you are environment. feeling So lonely, सबसे पहले anything, तो the हम लोग को ये solution for कहना that चाहिए is कि drugs only. गवर्नमेंट या सो पॉलिसी पर इसके ध्यान देना लिए चाहिए कि लोग उस सबसे तरफ पहले डेफिनेटली बहुत ही Government झुकाव policy, रहता है कि society, ऐसा गवर्नमेंट दिखा रहा है पॉलिसी डिप्रेस्ड इसमें है सबसे तो पहले ये इंट्रा parenting, इसका स्टेट सॉल्यूशन है और तो इंट्रा चला जाएगा। कंट्री। सबसे पहले जैसे
मैंने बोला पंजाब को लेके, अभी रिसेंट में जो न्यूज आया था कि मणिपुर में भी वो ड्रग्स, पहाड़ पे लोग जो ड्रग्स का जो खेती कर रहे हैं अफीम का, तो वो उसमें भी और लोग पुलिस को ध्यान देना चाहिए। और मैं मानता हूँ सबसे पहला हम लोग ब्लेम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक नहीं है, जैसे हम लोग बिहार को उदाहरण दिए,
जैसे इनिशियली जो क्या हुआ था कि जब ड्रग्स बंद होने लगा था, दारू वारू, तो वो जो कफ सिरप का जो दवा है उसको भी लोग उपयोग करने लगे थे नशे के रूप में। तो ये सब सोशल अवेयरनेस के आई थिंक हमें सोशल गवर्नमेंट पॉलिसी को Yeah. ब्लेम नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी तो स्ट्रांग वे में लाती है, लेकिन जो उसका मतलब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन है वो सही ढंग से नहीं हो कर पा रहा रहा है। है No, no, वहाँ पे No, वहाँ पे you can ध्यान tell देना चाहिए। even everybody is इम्प्लीमेंटेशन नहीं कैसे हो रहा है, हो रहा है इसके लिए वो भी हम चीज, लोग not only गवर्नमेंट लॉ बन जाती पॉलिसी है, इफ उसको सब कम इम्प्लीमेंट विथ सही से करना वो ज्यादा इम्प्लीमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। यस, इम्प्लीमेंट भी गवर्नमेंट के ही गवर्नमेंट के अंदर उसे ही आती है इम्प्लीमेंट अच्छे इम्प्लीमेंट। से कि यस, उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाती है अपने एरिया में, अपने इलाके में, और लोकल लेवल पे किस तरह से अवेयरनेस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये भी गवर्नमेंट को ही एक पॉलिसी के अनुसार उसको देखना पड़ेगा। जैसे हर एक स्टेट या में राइट अलग अलग राइट रूल है police or local authorities should be responsible for फॉर द मेन रीजन फॉर Yes. ड्रग्स। या drug supply इम्प्लीमेंटिंग chain ऑफ to break दैट that. पॉलिसीज। और आजकल No, क्यूरियोसिटी भी family- okay, one more यंगस्टर्स thing में, is there. See, नवीन से if that you आई थिंक have क्यूरियोसिटी family इज अ one वेरी more इंपॉर्टेंट तब थिंग। one आएगी more जब dimension we curiosity can is a talk main about motor. this. Like, if someone has some work and if he is busy with his life, then definitely he will not get that much time to do drugs and all. या So इसीलिए मैं बोला Yes, yes, yes. unemployment Actually, एक बहुत बड़ा unemployment is रीजन also है, a Employment is also reason. very उनके important. पास रीजन है काम ही कि वो बहुत लोग कम है, करने को कुछ है नहीं, और फ्रेंड सर्कल क्यूरियोसिटी ऐसा बन एमंग चुका है, यंगस्टर, तो इस यंगस्टर वजह ट्राई से भी करना चाहता ऐसा है कि प्रॉब्लम आता है। अगर हम Like, ये yes, नशा yeah, करते हैं what तो I was किस saying is प्रकार का उस definitely पे यूज unemployment होना and चाहता the है। lack of education that they are getting, because of that also you get attracted to drugs. अगर काम करने को रहेगा, आपका पूरा दिन scheduled है, you have some work to do, definitely you won't go for drugs. हाँ, डेफिनेटली स्टार्ट ऐसा तब नहीं है होता कि है सिर्फ जब, या अनएम्प्लॉयमेंट के अगर कारण ही स्टार्ट तब ड्रग्स होता होता है है। जब आप जैसे डिप्रेस्ड कि रहे, बट एक बार जब स्टार्ट हो जाता है अगर तो हम फिर ज्यादा ये काम सारा भी भी करने लगे फैक्टर्स और आता है। ओवर एंजाइटी ओवर मैं डिप्रेशन के कारण भी नवीन, मैं ड्रग्स इसी को लेने लगते सोलली नहीं हैं। बोल Yeah, सकता it's हूँ कि not like अनएम्प्लॉयमेंट ही I रीजन है was not saying ड्रग about, को फैलाने का, ऐसा नहीं बोल और सकता हूँ कि, बट एक पॉइंट बोल सकता है, एक रीजन हो सकता है कि या एक ये रीजन अनएम्प्लॉयमेंट हो ड्रग का। सकता है। yeah, हाँ, वो छोटा है, I माइनूट agree है, with नहीं कि Surya. बिग रीजन। Yes, Yeah, I should बिकॉज also जो add जॉब one more जो one जॉब वाले example लोग here हैं ना, जो towards the रोजगार वाला Navin's जॉब है, point. जो बड़े बड़े पोस्ट को होल्ड करते हैं, वो लोग भी ड्रग कंज्यूम करते हैं yeah, अच्छे yeah. लेवल पे। तो Yes, ऐसा नहीं बोल agree. सकते हैं जैसे कि फ्रेंड I सर्किल का here बात I है, should तो हम add लोग one इसमें example एक here. पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जैसे कॉलेज में हम लोग जब जा रहते हैं तो वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। तो उसमें मैं मानता हूँ कि कॉलेज का पॉलिसी और कॉलेज का स्ट्रिक्टनेस की कमी के कारण होता है। इसमें थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि वो हर एक यूनिवर्सिटी या हर एक कॉलेज का एक रूल होना चाहिए कि आपको वो क्या है, क्या अवेयरनेस है इसके बारे में फैलाने के लिए, क्या प्रॉब्लम है जिसके Yes, कारण बच्चे ये ड्रग हो रहे Yes, हैं। Yes, I yes, agree I with should you. add बहुत here अच्छा one पॉइंट point to दिया। here that बहुत सारे इसको ड्रग एक Development of एग्जांपल the देना कॉलेज से चाहूंगा, शुरू ये होते मेरे lack हैं। of कॉलेज का ही बात है। education. कॉलेज से एक एग्जांपल ड्रग्स मेरे लेना Regarding to शुरू the कॉलेज lack में करते of हैं और पहले जो education. आगे बैक चल के पोस्ट ड्रग हुआ एडिक्ट करता बनते हैं। था, वो बैक पोस्ट से एक आप बाहर जा सकते थे और वहां जो भी सिगरेट या फिर जो वाइन या बियर ये सब मिलता था Yes, बैक पोस्ट साइड में, और एक yes, अंदर में भी एक पता चल रहा था कैंपस के अंदर भी ऐसा हो रहा है। बट स्टार्टिंग में कैंपस या फिर जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इस बारे में पता था, बट स्टिल वो बैक पोस्ट को लेके कोई सॉल्यूशन कर नहीं रहे थे। बट आफ्टर yes, Naveen, लाइक I should आफ्टर add 2 or one more 3 point years here आफ्टर that दैट the उन्होंने lack बैक of पोस्ट बंद education. किया, कॉलेज और ये सब That एक poverty is in also रेस्टोरेंट main था, reason. वो रेस्टोरेंट भी बंद किया। तो कैंपस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या कॉलेज डिपार्टमेंट है उसका भी डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि responsibility यही है। टाइम होता है जिस टाइम आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, वही सबसे पीक टाइम होता है जिस टाइम के बहुत लोग एडिक्टेड होते Yeah, हैं। agree I with the agree with agree with तो the या Naveen. कॉलेज Brad. we should also एडमिनिस्ट्रेशन add या here one बहुत more इसलिए हम लोग So को Very, यही very we have no to true. discuss example poverty. हम लोग को to the यही तकना चाहिए कि lack of education. कॉलेज के Poverty. टाइम में लोग आते हैं। लेकिन इन रूरल एरियाज जहाँ जहाँ the, पावर्टी है the, वहां पर भी देखा गया है कि काफी ज्यादा लोग ड्रग का यूज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जहाँ पे पावर्टी थोड़ा ज्यादा नहीं है। तो पावर्टी के कारण भी ड्रग का यूजेस बढ़ रहा है, क्योंकि उससे No, आइसोलेशन, मेंटल प्रेशर एंड लॉट definitely कई yeah, I चीजें should हैं add जो one one या one जो example बच्चे here. या Anish will जो do बच्चे that there was a village पढ़ने in के लिए Punjab where the people will 80% of the youth in village in a Punjab they are go to the drug addiction. Means they are not have educated and they go for a small works, and after they don't give the money to home to the family, they use the drug addiction. 80% in a youngsters, and also that their parents will try different ways, that some of the parents will tie their children with the chains to stop this, and yes because yes I think this is lack of education, I think, and the lack yeah, of that's why I actually mentioned what I Raju, was saying is Raju, that's why I what mentioned I was saying in the education. initial statement also, like I said कि वो That's why I सोशल mentioned सर्कल की वजह education. से होता है। अगर किसी एक स्टेट में ये बड़ा हुआ है तो उसको सोशल सर्कल ही वैसा मिल रहा है कि वो प्रमोशन ज्यादा हो गए, वो ज्यादा प्रमोट होंगे लोग ड्रग्स की तरफ जाने के लिए,
तो इसलिए जैसा जो ऐसा ऑलरेडी स्टेट है जहाँ की ये प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है, वहाँ इस प्रॉब्लम को कम करना बहुत काफी मुश्किल होता है, क्योंकि डेफिनेटली आदमी अपने आसपास वाले को देखता है और वैसा ही बनना चाहता है. इट इज सेड दैट यू आर द एवरेज ऑफ द, you are always the average of the friends that you are spending your time with. तो और इसकी वजह से आपका रिसेंट सर्कल में जो डिपेंड न्यूज आया करता था है. कि अडानी पोर्ट पर sometimes it जो is वो in border villages also it is more. 2000 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ाया था, तो इसमें तो मैं मानता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी का प्रॉब्लम है कि वो अफगानिस्तान से ड्रग्स जो आ रही है और वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गई इंडिया में, सारे यूथ को इफेक्ट करेगी। तो इसमें मैं मानता हूँ कि एक स्ट्रिक्ट रूल जो जिसे पकड़ाया था अभी अडानी पोर्ट पर, इसके लिए बना के पंजाब में जो हो रहा है अभी इंट्रा कंट्री का जो ट्रांसफर हो रहा है ड्रग्स का, उसमें उसके पॉलिसी, और जो कुछ मणिपुर और मिजोरम की तरफ से जो वो म्यांमार की तरफ से जो ड्रग्स And सप्लाई I कर should रहे हैं। also we agree with the should point. also maintain a healthy environment, I think. I want to add one point तो that इंडिया में भी फोकस कि करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जगह इसका ड्रग्स का खेती होता है। जैसे इंडिया में भी बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जो ड्रग्स का है जो फार्मिंग होता है, जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कसोल साइड में बहुत होता है, इधर अफीम वगैरह का भी काफी ज्यादा होता है। तो इम्पोर्टिंग के साथ साथ में हम लोगों को अपने इंडिया में भी फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी फार्मिंग कम किया जाए। I should add one more point here पे भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है. main source of India, they are income cultivated उधर with इसकी the प्रॉब्लम of the government. employment use of there. the what the Main use of source the of the drug. income Most of the of time government. in Also used tribal for areas medical purpose. where they don't So have enough employment. That's why the people who know about this, So there is they will we have to cultivate this. I want to add And I want to add point. yes, I should add कि one more Yeah, I point here. agree That with Raju. They जो are doing drugs this का from generations only, and they yes, are sustaining their life beers on these is- drug और farming जो only. yes, शराब in की tribal शराब This areas is की they also an don't issue know of what से is जो the concern. impact of इनकम this हो वो crop. इनकम हो रही है, वो मेन Some सोर्स ऑफ fellows इनकम come है from outside, फ्रॉम they will गवर्नमेंट्स give me की. the money, so तो they will cultivate that. हमें अल्टरनेटिव सोल्यूशन So Yes. ढूंढने you can पड़ेंगे कि create जिससे the employment there in tribal areas also Yeah. to stop this supply Yes. chain. I agree with the Raju, but I think जो ड्रग्स जो बियर और जो गवर्नमेंट शराब गवर्नमेंट Now को we should also talk गवर्नमेंट about गवर्नमेंट भी और इवन गवर्नमेंट भी सबसे बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ जो ड्रग की जो सब्सटेंस होती है उस पर टैक्स जमकर लगाती है गवर्नमेंट, लाइक मेन सोर्स सिगरेट हो ऑफ गया, इनकम है. टबैको हो यस, गया, या गवर्नमेंट को वन मेन सोर्स ऑफ इनकम, दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग they have to develop some alternative solution of the income. Otherwise, there is a easy availability of drugs in main market. reason of like cultivating Yes. drugs are they are used in drugs mainly. They are used in Friends, I mainly believe the major factor cancer or treatment drugs the and major, many other the one force which is disease that lacking cannot is be us. cured easily. As a That society, we have drugs are used in that. So we as a that's society why we should use our influence to drugs are lower these numbers cultivated now. But by pressuring not only the people Yeah, are using it for addiction. Aditya is saying something good. to comparatively lower कि drug can be used as in health purpose, health cure purpose. That is one of the Yes, points. yes. But Yes, I should that could be in add one They are more mainly point. used उसपे in cancer restriction लगा treatment सकते हैं and कि वो other disease. हाँ उस पे बट उसपे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि प्रॉपर कहाँ उस पे कहाँ से एक कर सकते हैं मॉनिटरिंग गवर्नमेंट टीम रह पीपल को सकती है, वो मॉनिटर कर सकता है कि ये जो में उसका प्रोडक्शन प्रोडक्शन हो होना रहा है चाहिए, कहाँ जा रहा है. या कहाँ सुपरविजन में से कर प्रोडक्शन सकते होना हैं चाहिए उसको। उसका, अगर वो मेडिकल उसका इंडस्ट्री मिस यूज में नहीं होना चाहिए, कल्टिवेट किया जा रहा है तो वो मेडिकल इंडस्ट्री में सेल किया या जाना चाहिए। सुपरविजन में प्रोडक्शन होना चाहिए, यस Sometimes we Guys, the find time the is कोई up. मॉनिटर प्रॉपर करने के सुपरविजन लिए. होना चाहिए और Surya, I it's should या add. या you guys are now digressing for against the topic. The topic is Yes, just you ma'am. have to Who is to highlight blame? is to be blamed. The topic is going somewhere else related to some drug benefits and all. Okay, so I will go with the conclusion now, and conclusion was to be given by Karnam. Karnam, go ahead with the conclusion. Okay, okay, friends, let me conclude the discussion. The discussion was not very smooth, but the discussion was very informative. First, we have discussed who has to be blamed for these drugs. First thing is we humans are to be blamed. The drugs main reason for involving the drugs is one is social media. By watching films, youth are get attracted towards the heroes. While taking drugs, they feel like hero, but they didn't realize that after some days in the future, they will get affected. Their health, they will get affected with the health and all. They will damage their career. And second thing is corruption.
even if the drugs are coming to the state borders and national borders, if the policies are corrupted, then the drugs are passing. This should be eliminated. And other thing is bad parenting. Nowadays the parents are very busy. Most of the cases, both the parents are doing jobs. They have to spend time to take care about the children. And next is easy availability. The drugs are very easily available nowadays. If the youngster wants to take drugs, he can easily go to the shop and he is getting easily. First we have to cut this supply chain. Where first drugs where we are getting this, we are getting from the farmers. First farmers are cultivating this. Farmers, this is the main source of income for them. How to eliminate this? For some businessman will go there, hello farmer, do some farming, you will get multiple profits. If you cultivate wheat, you will get some money, but if you cultivate this, you will get more money. He will attract like this. The farmer didn't know this much, so he will cultivate and do like this. So in some ways we can't eliminate the farming, but we can eliminate by providing strict government rules. By providing strict government rules, the drugs can't reach to the local bodies. We can eliminate. In this way, we can cut the supply chain. And also by providing the counseling centers, by giving awareness about what are the pros and cons of this, about these drugs. That's it. Thank you, ma'am. Okay, now let me come. See, the content was good from some sides, but the usage, if I told you about the word usage, Amit and Naveen, daru, ye cheeze words nahi exactly bolte. Go for the words like alcohol. I told you yesterday also, number of times, do not be casual in your approach, and you guys are very much casual. Amit ने तो 2-3 बार बोला, नवीन ने भी वो reflect करते करते अमित के साथ में बोल दिया. Naveen, वो एक बार पता चला कि गलती हो गया मैम. You understand the other उस person टाइम ही also. पता चल गया. I am listening on your other head that yes, what kind of informalities you are making. Similarly, I'll just come with the very start. पहले अंश ने conclude वो किया था, introduction किया था, but अंश? Yes, sir. Okay, so Ansh, there were multiple mistakes. पहले बोलते बोलते you got underconfident, you got started bluffing in between. Parenting पे ही अटक गए. कभी भी introduction बनानी है तो go in one flow. Intro it was not that good. ठीक है? तो introduction में आपको थोड़ा और participation और inside participation भी increase करो अंश. There was not much participation which I could see. Only about the government policies को blame करना चाहिए. वो government policies पे आ गया. वहां पे सिर्फ एक आधा point था आपका जो in between था. So it was not a good start from your side. नवीन का अच्छा था आज. नवीन ने I think बीच में quotes जो दी. नवीन, if you have not used that words, नवीन जब पहली बार spending किया था, start किया था, how did you start? Spending time with parents and all that वहीं पे. About social circle में, what kind of social circle you have? No and heading. No heading was given at the very start. That पहले अगर अंश ने start किया था, yes, Ansha, I agree with the statement. Parents are to be blamed or social circle is to be blamed. Parents need to have a capture market on it. लेकिन you did not have any starting point where to start, where to initiate. वो कोई भी नहीं था, बिल्कुल first instance पे. In between you were able to participate a number of times. जैसे अगर मैं बोलूँ कि he goes somewhere, final कहाँ है, ठीक है, that was fine. Awareness के बारे में आपने बोला. जब सूर्य एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोल रहा था तो यू वर टारगेटिंग yes to aware it out. Means rest of the points were okay of yours. It was amongst all today the participation of Naveen was good. Yesterday if I talked about Prajwal का आज नहीं अच्छा था. Prajwal का बहुत कम participation था. A little domestic I think. और Prajwal की participation, it was very least participation today. Yes, बहुत कम थी. Yes. So I didn't get through the discussion. Like I don't. It was very easy. I give you a very difficult. कल और परसों बहुत difficult topics थे. आज तो topic ही बहुत easy था. It was not a tough topic. Omkar, whenever you speak, remove your earplugs. You spoke least. Your voice is not reaching to the people, right? तो ये आपकी voice problem है. This is from consecutively third time your voice problem is there. So every person needs to be very quiet if you are speaking something. So remove your earplugs and you can test it at the very start. ओके इन बिटवीन पार्टिसिपेशन सिमिलर वे. ओमकार की बहुत कम थी. आदित्य ने एक पॉइंट दिया, पर आदित्य वो डाइग्रेशन होके कहाँ पे हो गया कि हमको ड्रग तरह से यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीटिंग समथिंग्स एंड ऑल. क्वेश्चन क्या था? हु इज टू बी ब्लेम्ड? यहाँ पर मैं हमेशा बोला कुछ नया टॉपिक करना है तो जस्ट से लाइक दैट. नाउ आई वुड लाइक टू ऐड न्यू डायमेंशन टू दिस टॉपिक. न्यू डायमेंशन करके यहाँ डिस्कस कर लो. आपने वो वर्ड्स ही नहीं यूज किए.
तो आदित्य का और ओमकार की तो पार्टिसिपेशन लीस्ट थी, अंश की भी बहुत कम थी, प्रज्वल की भी बहुत कम थी। सिमिलर फॉर पूजा। पूजा जब स्टार्टिंग में, यू हैव पार्टिसिपेटेड टोटल 3 times आई गेस। जब पहली 2 बार आपने पार्टिसिपेट किया रिलेटेड टू डिप्रेशन, पेरेंट्स का रोल उसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाइन इनकम्प्लीट छोड़ दी। उसके बाद यू पार्टिसिपेटेड, पूरा चेन होना चाहिए क्या, यू वर लिसनिंग द पॉइंट्स ऑफ Naveen, Amit, Omkar. So they were talking about some kind of a chain that is being formulated. You just spoke one line. This much content is not sufficient. सिर्फ उनको एग्री करना, उसके बाद आपने एक फुल लाइन बोली है कूल बनने के लिए, दे डू लाइक दिस, दे कॉपी द एनवायरमेंट की मूवी से कॉपी करते हैं. So that is the only line which you spoke in full. Rest of the pointers you were just giving as one liner. one point भी नहीं चाहिए, कम से कम पूरी लाइन तो अपनी बोलो. ठीक है, तो वो पार्टिसिपेशन काउंट नहीं होती. यू जस्ट टोल्ड वन टाइम एंड दैट टू कूल बनने के लिए. यू जस्ट से दैट दे आर मोर इनटू द फेकिंग आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट. वर्ड्स को अपने देख के बोलो सारे जाने. You get into those words which are not required. Same way for Pooja, same way for Naveen. अमित के तो वर्ड्स कहीं और ही जा रहे थे. ठीक है, तो वो इरेगुलर यूसेज ऑफ वर्ड्स नहीं होने चाहिए. बहुत आपको देखना है, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर अ फॉर्मल इंटरव्यू, फॉर्मल डिस्कशन टेस्ट है. यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट पीपल ओवर देयर, दैट योर एवरी वर्ड शुड बी वेरी इन द टर्म्स ऑफ सिस्टमैटिक वन. दैट वाज नॉट अ गुड वन. उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट अनुराग, अनुराग के पॉइंट्स जो थे, अनुराग द पॉइंटर यू टोल्ड इट वाज गुड. जैसे थ्रू मूवीज, वेस्टर्न कल्चर, यू वर द ओनली वन हु इनिशिएटेड दिस पॉइंट एट द वेरी स्टार्ट. जैसे अनुराग ने मूवीज का स्टार्ट किया, सूर्य ने एजुकेशन सिस्टम का स्टार्ट किया. ये दीज वर पेरेंट्स वाला स्टार्ट हुआ पूजा से, पेरेंट्स से. उससे पहले नवीन ने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, पेरेंट्स वाला पॉइंट पूजा ने स्टार्ट किया. तो एवरी वन गेव डिफरेंट पॉइंटर्स, बट यू हैव टू स्टिक एंड गिव सम एग्जांपल्स. जैसे अनुराग ने उसको कवर अप किया, सूर्य ने उसको एजुकेशन का, जब राजू ने फिर से उठाया, सूर्य ने फिर बोला कि यस ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट एजुकेशन सिस्टम. So that was a good pointer कि आपने different dimensions ला रहे हो टॉपिक में and you are quoting it out. But अनुराग similar way, participation कम लगी मुझे. Surya, when you speak, you get too loud in that run. ठीक है, वो इस तरह से लगता है that you are getting informal in between. जब भी बोलो, you have to maintain that some kind of a heading in it. से अगर मैं बोलूं, आपने गवर्नमेंट रूल्स के बारे में बात की, योर पार्टिसिपेशन वाज वेरी ओके. पार्टिसिपेशन कम नहीं थी सूर्य की. सूर्य में एक कमी थी, दैट वाज व्हेनेवर ही स्टार्ट समथिंग, उसके पॉइंट्स में क्या होता है, स्टार्टिंग कुछ नहीं होती है, इंट्रो नहीं होती है कुछ. ठीक है, whenever you address someone, I agree with your statement, I disagree with you, Raju. Yeah, Raju, you're giving a very valid point. इस तरह से बीच में कोट्स कर दिया करो, that is it is becomes relevant for you. Formal discussions में कुछ ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं if you do that. ठीक है, ये चीजें सीखो. अनुराग की लीस्ट पार्टिसिपेशन मुझे लगी, उसके बाद पॉइंट वाज गुड. ठीक है, एक होता है कंटेंट नहीं बनाना आता, कंटेंट तुम लोग को बनाना आता है पर तुम्हें डिलीवर नहीं करना आ रहा. करनम की पार्टिसिपेशन भी नहीं थी. करनम वेयर वर यू द एंटायर ग्रुप डिस्कशन. कंक्लूजन के टाइम भी हमेशा ये मत स्टार्ट करा करो, इट वाज नॉट अ स्मूथ डिस्कशन, इट वाज नॉट दिस डिस्कशन. इट कैन नेवर बी स्मूथ एंड ऑल दैट, राइट? एंड रिलेटेड टू सच टॉपिक्स इट कैन नॉट बी. So you could say it out. It was a quite healthy discussion where we were sharing different dimensions. We were learning about different dimensions, how the youth is getting the usage of drugs, who is to be actually blamed. And we got into perspectives that yes, it can be through bad parenting, it can be through the Western culture which is being imposed, it can be through the easy usage of drugs, peer pressure which is being available, or you can say through the movies, entertainment sectors. A lot of other things were being discussed, and we highlighted that this is a very big problem and government need to take exact right measures to actually eliminate it out so that our youth could do something progressive for our own country. So you should have a very generic and a neutral ending line at the end. When I write it at the end, one liner at end means कि उसको एक progressive side पे करके छोड़ो, कि अपनी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए. हर ऐसा टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक आ जाए, करप्शन का टॉपिक आ जाए, ड्रग यूसेज का टॉपिक आ जाए, उसमें एट द एंड कर दो कि गवर्नमेंट शुड डू समथिंग needful so that such things get eliminated and our country can be on the progressive side. एक generic ending आपको मिल जाती है, आपको जरूरत ही नहीं है कि बार बार कुछ नई ending याद करने की. It was a very healthy discussion. Different perspectives were being shared. Some of the dimensions we discussed what this is, जो भी आपने discuss किया. At the end, we need to go for some bright sides. We need to look for the brighter sides and improve our shortcomings. Government need to have some useful plans, and only then our country can progress. कितना डिफिकल्ट था ये, हर सोशल इविल में आ जाएगा आपका कंफ्यूज. किसी भी आपको डिफरेंट याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक्स यूज करके जीडी में करो प्ले, तभी आप, इफ आई से इट आउट, यू कैन विन इट आउट. राजू का पॉइंट था, राजू यू स्टार्टेड, आई थिंक यू गेव अ गुड पॉइंट एट द स्टार्ट कि जैसे
मूवीज का क्वालिटी, जैसे आपने एड्रेस किया कि नवीन ने ये बोला, उसमें यू एग्रीड, फिर आपने उसका बोला सूर्य का बोला आपने, तो यू मेंशन बोथ द पीपल एग्री विद इट, दैट्स फाइन। बट जब आपने सेकंड पॉइंट बोला राजू, इट वाज टू लेंथी कि आप आई थिंक यू वर टेलिंग अबाउट डोमेस्टिक एंड वर इट यू राइट? डोमेस्टिक वाला राजू ने पॉइंट दिया था, किसने दिया था? Who gave the point? I have noted it down. I'm not able to find it out right now. डोमेस्टिक वाला Government policies को I think there was a point which was related to the farming and Punjab का, yeah. yes. Raju was only given पंजाब that. पंजाब वाला मैं दिया था उम्मीद। नहीं, उससे पहले एक point था राजू. What was the second point which you gave? Ma'am, in Punjab, there was a village nearer to the border. At that time, the 80% of youth are addicted to the drugs. The parents will not find any solution. They tie their children with chains. And even government will introduce rehabilitation centers. And I think the main reason is education. That was already which I was telling कि आपका point second में राजू बहुत ज्यादा lengthy हो गया था. That person actually needs to cut it out if they were trying to understand the crux. I always tell you जब आप point दो तो shorten करके दो point अपना. Your content first one was good. मैंने कल भी बोला था participation अपनी 3-4 बार रखो. Starting में, in between, ending. कुछ इस तरह से अपने आप को रखो. 3-4 times minimum should be there. Second, it should be that whenever you are speaking, speak a quality point. छोटा point बोलो ताकि आपका ad भी हो जाए. पहला पॉइंट आपका ऐड हो गया, मुझे जिस जिसका डायमेंशन ही आ रहा, सूर्य का अच्छा था, इस तरह से डायमेंशन अच्छा था. इफ आई टॉक अबाउट राजू का एक पॉइंट अच्छा था, देन इट वाज अनुराग का एक पॉइंट अच्छा था, अंश का स्टार्टिंग इट वाज नॉट गुड टू दैट एक्सटेंट, बीच में एक आधा जो पॉइंट दिया वो ठीक था, नवीन का बहुत अच्छा था आज, प्रज्वल का बहुत एवरेज था, अमित की कैजुअलिटी थी, ओमकार की पार्टिसिपेशन कम थी, आदित्य की सेम वे इट वाज वेरी लेस, कर्णम की सेम वे इट वाज वेरी लेस. तो उस तरह से यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे हम गलतियां कर रहे हैं, वेयर वी आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट. या मैम जैसे कि इंट्रोडक्शन में था, तो क्या उसमें हम 4-5 जो पॉइंट मुझे मतलब पता है उसको मैं रख सकता हूँ, जैसे बैड पेरेंटिंग. I told you every time जब भी आपके पास ऐसा टॉपिक है, you have to say some of the dimensions can be this, rest can be unfolded one by the team. ये GT में लाइन भी यूज हो सकती है, यहाँ पे भी यूज हो सकती है. आप कुछ दे सकते हो लेकिन आप सारे नहीं दे रहे हो ना, बिकॉज इट्स नॉट अ GT कि आपने रिस्ट्रिक्ट करना है. GT तो ऑलरेडी द पर्सन विल बी टारगेटिंग कि आप हमें 3 कैसे फिक्स कर रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है. दैट इज इट कैन बी ऑन द एंटरटेनमेंट लेवल, पेरेंट्स लेवल, इंडिविजुअल लेवल, एजुकेशनल लेवल, कितने लेवल्स पे प्रॉब्लम है. अगर आप 3 कर दोगे तो दैट इज नॉट बाउंडिंग इट आउट. यू कैन सिंपली से दैट सम ऑफ द डायमेंशंस कैन बी दिस, रेस्ट कैन बी अनफोल्डेड वन बाय आवर टीममेट्स. सो आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन. मैं यही बोल रही हूँ, माय मेन टारगेट इज जब भी कोई सोशल इवल वाला टॉपिक आए, सोशल इवल्स के बहुत टॉपिक है, सोशल इज नॉट अबाउट लाइक सती सिस्टम जो आपने छोटे होते पढ़ा है. इवल्स मींस करप्शन, सम काइंड ऑफ यू कैन से अनएम्प्लॉयमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस आ गया, विमेन के साथ प्रॉब्लम्स आ गई, हरासमेंट आ गया. फर्स्ट आई वाज गोइंग टू डू सम एथिकल डिलेमास इन बिजनेस, दैट इज देयर, एथिकल डिलेमास इन वर्क प्लेस. जैसे कई बार आपको बोला जाता है इन इंटरव्यू, in HR also it is being asked, are you a very much trustworthy person? So they yes. So are you very honest? Yes, ma'am. If we have to make you somewhere diplomatic, will you be diplomatic in that situation? So you are like, yes, ma'am. So how can you be honest and diplomatic at the same run? So these are some ethical dilemmas to be discussed. And that was a topic which I was going to bring first for you. But then I thought, let's start with the easy topic, because last 2 days we have done 4 discussions and every time the topic was very tough. So yesterday we did brain drain. Before that we do on EVs and all that. So आज I wanted a lighter mood for you guys. Otherwise the topic would have been ethical dilemmas for workplace, or it would have been moonlighting. Moonlighting भी बहुत important topic है. Yeah. जैसे सोशल इशू पे आते हैं तो आपने एक जनरल कंक्लूजन बताया था, क्या आप वो रिपीट कर सकती हैं थोड़ा सा? Yeah, that is already, see, it's already been recorded the way I told you that कि जब भी कोई social level पे आ जाए, कोई corruption पे आ जाए, किसी पे भी आ जाए, you just have to say it out that yes, it was a very healthy discussion, it was a very interactive session, and we had a you can say number of perspectives were being discussed by one another. बहुत ज़्यादा perspectives हम लोगों ने discuss किए थे. उसके बाद आप बोलोगे that there are some of the important dimensions जो आप लोगों ने discuss की. आप 1-2 discuss कर सकते हो. किसी का अगर नाम याद है, उस नाम के साथ कोट भी कर सकते हो, ओनली इन द केस अगर आपको बहुत रिफाइनली याद है, एंड इफ यू वांट टू कोट इट, अदरवाइज इट्स ओके. ठीक है, उसके बाद यू जस्ट हैव टू सेंड इट आउट दैट या देयर आर ऑलवेज सम ड्रॉबैक्स एंड वी हैव टू लुक फॉर अ प्रोग्रेसिव साइड. गवर्नमेंट नीड्स टू प्लान फॉर दैट. गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए. ओनली देन अ कंट्री कैन बी ऑन द डेवलप्ड स्टेट इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग वन. ये कुछ जेनरिक लाइंस है. सरकार को ले आओ, प्रोग्रेशन पे ले आओ,
उससे पहले आप जेनरिक वो एंडिंग कर दो, इस तरह से। आई एम टेलिंग यू, अपने आप खुद टॉपिक्स ना कुछ अभी बंद करके खुद कोशिश करना, उसमें हर एक में बोल के देखना। whenever you try to implement it out, it becomes easier for you, smoother for you to speak, otherwise it won't be। ठीक है, थोड़ा उस तरह से प्रैक्टिस करो अपनी चीजों। नाउ बिफोर आई कमिंग टू यू each one more thing, कंटेंट वाइज इट वाज ओके, डाइग्रेस मत हुआ करो। सबसे इंपॉर्टेंट और ड्रॉबैक होता है व्हेन यू डाइग्रेस इन अ जीडी। जब तुम लोगों ने, आदित्य ने बाद में दिया, सूर्य वो टोल्ड यस आदित्य, इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट, वहां पे तुम लोगों ने डाइग्रेस होके पॉजिटिव साइड्स ऑफ ड्रग्स यूज शुरू कर देना था, दैट वाज नॉट इवन द टॉपिक। ठीक है, तो वहां पे मत जाओ, डाइग्रेशन इज वन मेन प्रॉब्लम, एंड इफ सूर्य इज एग्रीइंग, इफ आदित्य इज एग्रीइंग, इट विल गो टू सम अदर साइड्स एंड द टॉपिक यू गाइस गोइंग बी डिस्क्वालिफाइड। ठीक मैम है, तो अगर कोई मतलब कोई ये जान गया कि हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं उससे टॉपिक से, तो क्या स्ट्रांगली डिसएग्री कर सकते हैं? you have to speak. Yes, I think we are getting digressed, so we can talk about another dimension. खुद बोल सकते हो, that is the what मैं वही करी ना। सूर्य ने जहाँ पे एग्री किया, सूर्य could tolerate out, ये देते, it's a very wonderful time, but I think we are getting digressed from the topic. So topic is this, but we can talk about something else, right? Clear there हुआ is a सब? no negative impact कोई रहेगा No, इससे? no, that's not it. That means you are aware and attentive about the topic. That is why you are very listening very carefully. Otherwise, you guys are you just have noted some points in your notebook and you just want to speak about that topic. It should not be like that. Okay. Now I'm just before I conclude with this discussion, we always go for 2 topics in a day. Like yesterday also, day before yesterday also, we always go for 2 topics in a GD. Right now we have less time. It's only 10 minutes left. So I would just introduce a topic for you, and I want you to do it at your homes. Can anyone tell me about moonlighting? What is moonlighting? Yes, ma'am. Like when even if doing you are working second- at some place, but still like in your free time you are doing freelancing or working from some other country, so You are for doing some another other job. companies. Company. So At a one yeah, time you are that is doing two moonlighting. jobs. Yeah, in working two for 2 companies different simultaneously. companies at the same time. Yeah, so exactly moonlighting. This was a very important topic because moonlighting, this is a being preference of number of people in youth, and many of the freelancers do it out. So it's actually a working as an extra job, and you can say it out, especially when you're not telling to your employer about it. So what are the advantages? What are the drawbacks of moonlighting? That you can just note it down on your own. Tomorrow in the session, we can have a 10 minutes discussion on it. The main topic will be something else, but I want you to prepare this topic. Come prepared with this topic. What are the benefits of moonlighting? What are the drawbacks of moonlighting? Why youth is so much into forcing itself to have some kind of a moonlighting? Why everyone wants a second employment as of now? So this can be the next topic, and this is very important one because this was asked in the recent one of the PSUs, not in the IOCL, but like in the GAIL, the money can't buy happiness. That was the topic on 16th. Similar way, moonlighting was a topic which was asked in, I don't remember, it was in STVNs or something. The exact PSU don't remember. Okay. Ma'am, So I this want was- to ask one thing. Like जैसे अगर OTT वर्सेस थिएटर का मान लीजिए कोई आता है टॉपिक, we have done it, that topic also. नहीं तो मैम मुझे पूछना था जैसे कि अगर क्या मतलब थिएटर के हम केवल सपोर्ट में ही बोल सकते हैं या फिर उसके नहीं, अगेंस्ट भी? honestly, you can go against that. Yes, you're in the favor of OTT, you are against a theater, or you can go vice versa. Now, do remember, it's not a debate that you have to stick to one point. You can change your perspective. आप starting में suppose OTT की favor कर रहे हो, बाद में theater की favor करने लग पड़ो। अभी theater day आया था, I think theater day was celebrated. Yes, I don't know exact day, right? So all the tickets were at 99. There was some kind of this just. That was a day of a kind of a celebration. Theaters are not exactly the theaters, movie theaters only. अगर आपने theaters की देखी है तो plays जहाँ पे होते हैं, you might have gone to, like in Chandigarh there's a Tagore theater and all, so we go over there, we have, and that is free of cost. Elders also come, basically the elder people do come, they enjoy some good company. It's just free of cost, just for a good time, and the people get regular usage of that. मतलब मैम ये था कि उसका सपोर्ट भी कर सकते, ऐसा नहीं कि अगर हमने शुरुआत में अगर हमने उसका सपोर्ट किया है तो बाद में उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये पूछना था मतलब मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन गो इन एनी पर्सपेक्टिव। सपोज नवीन ने दे दिया कि नहीं थिएटर नहीं अच्छे हैं और आपने दिया था थिएटर अच्छा है, तो बाद में आप चेंज कर सकते हो। यस नवीन, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, इन दैट केस थिएटर्स आर नॉट गुड, आप एक्सचेंज और चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उससे कुछ मतलब पॉइंट कर सकते हैं क्या स्टार्टिंग में मेरा? नो, इट्स नॉट, दैट इज व्हाई ना इट इज अ डिस्कशन में आप अपने पॉइंट्स को चेंज और यहाँ पे कर सकते हो। स्टिकिंग करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, स्टिकिंग करना डिबेट में इम्पोर्टेंट होता है।
ठीक है, तो यू कैन गो फॉर इट, बट इट शुड बी अ वेरी वेरी वैलिड काउंटर पार्ट जहाँ पे आप बोल रहे हो। ये नहीं होना चाहिए आपने इतनी अच्छा इसे बोला कि थिएटर तो बहुत ज्यादा वो है, स्पेस फ्रेंडली नहीं है और बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है, अगले पे बोलो नहीं नहीं वेस्टेज ऑफ टाइम तो नहीं है, अच्छा टाइम यूसेज है, मतलब किसी और डायमेंशन में एग्री कर लो, सेम डायमेंशन में मत एग्री करो, ठीक है। उस तरह से आप चीजों को एक्वायर कर सकते हो। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया भी था, आई थिंक, ओटीटी वर्सेस किया थिएटर, वी हैड डिस्कस्ड इट, इवन यस दिस आई थिंक टॉपिक, हाँ ये इवन कम दिस मैम, टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड। यस मैम, आईओसीएल के जो रिसेंट अभी वो जीडी हुआ था ना मैम, इसमें आया है ये भी ओटीटी वर्सेस थिएटर। हाँ, ये दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन जीडीज, आई थिंक हमने वो भी ये वाला भी टॉपिक, हु इज टू बी ब्लेम फॉर ड्रग यूजेज, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले। तो सम ऑफ द टॉपिक व्हिच आई फाइंड इंपॉर्टेंट, आई एम आल्सो रिपीटिंग इट आउट, ताकि तुम लोग की हेडिंग्स हो जाए कि सुपर लेवल से आए तो कैसे बैलेंस करना है, इससे आए तो कैसे बैलेंस करना है। हाँ मैम, एक्चुअल जीडी में आ भी गया मैम ओटीटी वर्सेस थिएटर। हाँ, यही ना बोल रही हूँ, तो हमें इस तरह से डिलेमास, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यूथ, यूथ से रिलेटेड तुम लोग को बहुत टॉपिक्स आ सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी, यूथ, एंटरटेनमेंट, ये सेक्टर्स होते हैं। तो वो सेक्टर से एक एक टॉपिक को, बेस्ट एक टॉपिक याद कर लो, उसके बेसिस चेन से आप करते जाओ, सिमिलर वे है, ठीक है। मैम पॉलिटी से मैम रिलेटेड मतलब कैसा टॉपिक आ सकता है, आप हिंट दे सकते Quality, हैं like थोड़ा सा? I'm telling you, yesterday when at the night I was thinking about the topic to be given today. Like there were 3-4 aspects. जैसे पॉलिटी में आता है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। So you can talk about जैसे moral values are to be ingrained in the elections, or moral values are the need of the hour in the politics, or changing landscapes of politics. तो ये कुछ जेनरिक टॉपिक्स होते हैं, अगर ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लोगे, कोई भी पॉलिटी का टॉपिक आ जाए टारगेट कर लोगे, ठीक है। We will have that, those like tomorrow we can have one of the topic of that era. डोंट वरी, एक एक डायमेंशन को कवर करते जाओ और खुद से पर्सपेक्टिव को प्रिपेयर करते जाओ, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। यस आई विल हेल्प यू आउट इन इट, मैम, डोंट, या नवीन। यस मैम, एक डाउट था, करंट अफेयर या करंट न्यूज जो भी चल रहा है उसमें क्या क्या मैम कवर कर सकते हैं, बिकॉज उधर थोड़ा वीक है हम, अगर तुम्हें याद, हमने टॉपिक किया था क्योंकि कि बीसीसीआई में अभी टिकट सेल नहीं हो रही है वर्ल्ड कप 2023 में, T50 को बहुत ज्यादा डीमोरलाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो वो किस तरह से, मैंने बोला था टॉपिक ओनली वो रन, ये करंट से रिलेटेड था, एंड इट वाज टॉक्ड कि जो टॉपिक है बेसिकली दे वांट टू से इट आउट, जैसे भी कोई भी करंट में आता है। अभी ईवी व्हीकल्स हमने अकेला वो डिस्कस नहीं किया, ईवी में बहुत ज्यादा जो व्हीकल्स हैं जिनको आग लग रही है, कंप्रेशर से उनका वो हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, एंड मेनी व्हीकल्स ड्यू टू हैवी सनरेज, ये सारी न्यूज में आ रही हैं चीजें, इसी पे डिस्कशन, और ये एक रेलेवेंट करंट से भी रिलेटेड है, ये नॉर्मल जी टॉपिक्स भी हैं, इस तरह से यू हैव टू कंपेयर इट आउट। अब इंडो कैनेडियन रिलेशंस हो गए, या फिर आपके जो पैलेस्टीन यूक्रेन वाला है, इसका सिंपल बन सकता है जैसे हमने किया था, नो वन विंस इन अ वॉर, ठीक है। वॉर इज अ काइंड ऑफ डबल एंडेड स्वॉर्ड व्हिच गिव्स नथिंग एट द एंड, कुछ इस तरह से वॉर से रिलेटेड, अगर वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे आपको, इनडायरेक्टली ऐसे टॉपिक्स, प्रोवर्बियल टॉपिक्स पूछते हैं, ठीक है। बिकॉज समटाइम्स दे डोंट वांट अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक एंड दे डोंट नो whom to support, whom to end, you guys are to do it, so that is why they can talk about some such topics. और अगर ये वाला इंडो कैनेडियन उसमें भी आ रहा है, अगर आपने ये टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है, नो वन विंस इन अ वॉर, वॉर देयर इज अ बॉर्डरलेस स्टेट इज अ मिथ और रियलिटी वन, तो वो आप ये कोट्स उन टॉपिक्स में भी कर सकते हो, आपका पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा, आपका जनरिक का जनरिक हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट आई से यू, जब टॉपिक करो स्मार्टली करो उसको, बहुत हेल्प करेगा, स्मार्टली नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। स्मार्ट वे से थोड़ा करना शुरू करो, क्लियर। अब बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? डन, चलो ग्रेट, विल मीट टुमारो, ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर।